Gee, we're live. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the great show that everybody's been looking forward to. I hear if there is a lot of queries and excitement about the show. We're very excited to be here and talk about e-commerce and its challenges. हमारे पास एक बहुत ही ऑगस्ट पैनल कहना चाहिए, एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेयर्स की जो who are actually making the difference in Pakistan. And let's do a very quick introductions. जिनको नहीं पता उनके बारे में, just for their benefit for the show, and then we will move on to the discussion of the core issues of e-commerce and its challenges. जी, let's go round. फराज आपसे शुरू करें. ठीक है. So my name is Sayyid Faraz Javed, and I'm working as Chief Information Officer at NeaPay. NeaPay is an e-money institution, an upcoming e-money institution, and we are in the pilot phase right now with the State Bank of Pakistan, and soon we'll be going commercial. So I mainly look after the technology, security, and some part of the business operations, and I'm an active member of the business strategy committee at NeaPay. So Great. This is Thank you, my Faraz. briefing. Thank you. Ehsan. Assalamualaikum. My name is Ehsan Saya, actually, not Ehsan. Ehsan. Sorry. My bad. No, it's okay. And I'm the managing director of Daraz, which is an Alibaba company focused predominantly on e-commerce and online and offline retail. That's it. Great. Hamza. Assalamu alaikum. I'm Hamza Abdul Rauf, and I'm the co-founder of Telemart, which is an omni-channel controlled e-commerce marketplace, and we've been operating in Pakistan since the last 6 odd years. Great. Rafiq. Hi, Rafiq here. I'm the co-founder and chief operating officer for Bikeia. Bikeia is a market leader in the bike taxi business in Pakistan. And prior to Bikeia, I worked in the courier logistics industry in Pakistan and Canada. Ahmed. अहमद आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट है अहमद. I'm sorry. No worries. So I'm Ahmed Rauf. I'm the co-founder of Telemart, और हमजा यहाँ पे पैनल में तो हमजा का बड़ा भाई भी हूँ. ठीक. यूसुफ रिजवी. देखिए 2 यूसुफ हैं, so I'll be very careful. जी. Assalamualaikum. My name is Yusuf Rizvi. I'm the CEO of Checkin.pk, which is Pakistan's one of the leading online travel website. And we've been in the market now for at least 6 years, and look forward to learning from each other, I think, and discussing about the e-commerce market in Pakistan. ठीक है. यूसुफ जमशेद. सर आप म्यूट पे हैं यूसुफ साहब. सर आप म्यूट से बात कर रहे हैं. नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है. सॉरी, आई थिंक कुछ माइक का मसला है. लेट्स गो टू अंस एंड यू कैन फिक्स इट. जी, मोहम्मद अंस. दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन. Okay. Yeah. So I am CEO of Swift Logistics, and we're trying to revamp and reinvent the logistics industry in Pakistan. It's like a sister concern company of GT Logistics as well. It looks after the B2B section of logistics. That's it. ठीक. यूसुफ जमशेद, आपकी आवाज अगर आ रही हो तो हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लें. नहीं यूसुफ, कुछ माइक के साथ मसला है शायद. आई थिंक माइक फिक्स कर ले, मैं फिर आती हूँ आपकी तरफ. अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी. ठीक है. So when Kamal called me and said, Zainab, can you do this moderation? मैंने कहा मेरा क्या ताल्लुक ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से. फिर मैंने सोचा नहीं, हम सबका ताल्लुक ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से,
we're all customers after all. We are B2C customers for you guys, and we're B2B customers. And the panel itself, the people who are represented on this panel, was a big attraction to really understand. So I'm hoping कि हम actual में जो कुछ challenges अभी हम face कर रहे हैं, उनके कुछ challenges और solution पे बात कर सकेंगे, और उसको एक concrete discussion की सूरत में लेकर आएंगे. फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि I'm not too current with the industry, मैं थोड़ी research की, तो पता चला 2017 में हम कह रहे थे 1 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2020 तक, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. गवर्नमेंट ने भी बहुत इनेबलिंग काम किए उस वक्त, पीटीए ने इनेबलिंग काम किए, बहुत सारे सेक्टर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारे, जैसे आप सबने कंपनीज खोली और उसको इनेबल किया है पूरे इकोसिस्टम को. 2020 में जब हम खड़े हुए हैं, और अभी ये एक लेटेस्ट राइट अप है अक्टूबर का, जिसमें जो फिगर्स मुझे मिले हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 78.9% of e-commerce in Pakistan, 33% and 33% in volume and value. So that's sizable year-on-year growth. E-commerce transactions जो पहले सिर्फ COD पे लिमिटेड थी, डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड्स के नंबर्स हो गए 88% and 18%. सेकेंड क्वार्टर में हाई थी, ऑफ कोर्स बिकॉज एक ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल बन रहा था, और ई कॉमर्स मर्चेंट्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ गई, 30% मोर हो गए हैं. तो ये सब कुछ हमने फेस किया है 2017 से, और 2020 में खड़े रहे हैं, और हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स लाई हैं इंडस्ट्री में. आप जैसे प्लेयर्स ने, यू बीन एबल टू bring this change in Pakistan. So let's talk about the current challenges. अब क्या challenges हैं, और अगर हम 2025 की बात करते हैं तो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं और क्या challenges हम face कर रहे हैं. So if I were to give everybody 1 minute to give a very brief on the one challenge that your company is facing, the topmost, and what do you think as a challenge, and what is one solution for you कि ये हो जाए तो हमारा challenge सही हो जाएगा उसमें. So if we go around the table once, and then we can go deeper into each challenge. Ji, Faraz. We'll just keep this round so that it's easier just to follow. I believe I'm not the right person to start with. I would say that's okay. You're on the leftmost right now for me. I can share the experience as a consumer, or what problems do I experience as a consumer. So थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस अपना एज अ कंज्यूमर बताता हूँ. आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग ऑन द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2 years ago. मैं कोई बहुत पुराना कस्टमर नहीं हूँ, एंड द मेन रीज़न वाज दैट आई वाज नॉट श्योर कि जब मैं किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, सो मुझे जो प्रोडक्ट नज़र आती है वो प्रोडक्ट वैसे ही मेरे घर पे आएगी. सो आई वाज अनश्योर. फिर वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक अ रिस्क, और मैंने कोई शायद एक छोटी सी चीज़ ऑर्डर की, वो मेरे पास आ गई, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मैंने किसी बहुत अननोन ई कॉमर्स प्लेयर से ऑर्डर की थी, जिसकी वेबसाइट भी नहीं थी, और कुछ व्हाट्सएप पे आया था या ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझको पता नहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हूँ भी या नहीं. सो एंड आई गॉट द प्रोडक्ट राइट, बल्कि वो आई रिमेंबर दैट प्रोडक्ट दैट वाज मीरा कास्ट प्रोडक्ट, वो जो आप कास्टिंग की प्रोडक्ट होती है. एंड देन उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा गेन हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और विद टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा. सो एक तो चीज़ ये नज़र आती है कि लाइक आई मोस्टली यूज दराज. सो एहसन, थैंक यू फॉर द ग्रेट सर्विस. दराज हैज़ बीन माई, मतलब अब मैं इतना ऑर्डर करता हूँ दराज से कि मैं दराज वालों से कहता हूँ कि सामने यार मेरे घर के को लगा लो तुम लोग कोई. तो मेरी कोविड के अंदर बहुत मैसिव ऑर्डरिंग हुई है, ग्रोसरीज फ्रॉम दराज एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सब मैं दराज से कर रहा हूँ. थैंक यू फराज. हाँ, just give me a few seconds. So I feel कि एक trust factor is very important, कि जो product की quality and the service quality, that's really important. वो अभी लोगों तक उस पे उनका लोगों का ट्रस्ट नहीं आया है. दूसरा इसमें COD रेलिंग है, उसका रीजन भी यही है कि लोगों का ट्रस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी पे नहीं है, तो वो पहले चीज देखेंगे एंड देन पे करेंगे. तो these two things I feel के as a consumer चैलेंज है अभी. ठीक है, ये चैलेंज है. ऐसा आपके ख्याल में, being one of the bigger players in the market, जी.
आई थिंक इसमें 3 मेन रीजंस हैं। पहले जैसे फराज भाई ने बताया कि डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से अगर आपकी एक सीओडी पे ऑर्डर होता है तो आपका सक्सेस रेट इज मे बी इन द मिड 80s। अगर आपकी प्री पेमेंट से अगर कोई ऑर्डर आता है तो इट्स मे बी 99% प्लस। So this causes a lot of issues for a lot of companies because फिर आपकी reverse logistics में मसले आते हैं if there's a lot of rejections because of COD. So very quickly, digital payments. Number 2 is logistics. और इधर हमारे पास logistics की है, so I won't get much into that. But कि आप जैसे हमारे मुल्क में actually addresses भी they're not there, postal codes are not there. So अभी आप किसी को एड्रेस समझाते हैं तो आप बोलते हैं आप इस दुकान पे जाएं, वहाँ से आप राइट पे जाएं और फिर मैं उधर कर रहा हूँ तो आप मुझे दे दीजिएगा। So it's but maybe I'm exaggerating, but that's number 2 and second, third, and I think that's the biggest issue still is customer trust. और उसके हवाले से I think that's our focus, at least at Daraz. Number 1 and number 2 we've tried to solve through digital payments. हमने Daraz wallet introduced था, logistics के हवाले से we introduced Debt, Daraz Express, which does now 65-ish% of our deliveries. Finally, on the customer trust side, there's a lot that we have to focus both on customer as well as sellers. इसमें अगर आपके governance policies in terms of आपकी जो delisting होती है, product quality में आप क्या governance करते हैं by SKU. Just recently we've made the decision to delist almost more than 1 million SKUs because we have certain sellers that repeat their shops, repeat their SKUs. The idea being कि अगर आप customer experience पे focus करेंगे, then you'll always have a leaky bucket, right? People will come in, people will leave. People will leave. So those are the 3 main challenges, and I'll pass on. So, yeah, Hamza, add करें इस पे। अच्छा, आपने पूछा कि ई-कॉमर्स मर्चेंट्स के लिए कौन सा वो इस वक्त पेन पॉइंट है, चैलेंज है जो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम टेलीमार्ट की बात करें तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जो थोड़ा टफ टाइम देती है ई-कॉमर्स मर्चेंट्स को। और हमारी जो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं, दे आर ऑब्वियसली नॉट वर्किंग अप टू द मार्क। तो इट्स लाइक चूजिंग बेटर फ्रॉम द वर्स्ट। तो इसमें यह है कि आपको पता है कि कस्टमर को आप अच्छी चीज दे दें। हम कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस हैं, तो हम सेलर्स की फिल्ट्रेशन, ऑनबोर्डिंग में वो सारा रिस्क कवर। Hamza, we're losing you. Yeah, can you guys hear me now? जी। तो लॉजिस्टिक्स का मसला वही है कि हमारा जो कंप्लेंट रेशियो अगर 2 या 3% है भी, उसमें 80% कंप्लेंट्स जो होती हैं वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होती हैं कि टाइम पे पार्सल बात करते हैं फिर इस पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है रफीक, आपके लिए क्या बड़ा चैलेंज है? I think I'm going to answer this question slightly differently. I think you need to understand the problem at a slightly more granular level. हर इसमें बहुत stakeholders हैं। एक supplier, एक vendor है जो कि माल बेचता है, बीच में एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर वो डिस्प्ले होता है, फिर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो उसको फुलफिल करती है, और एक टर्मिनल कस्टमर है। इन दैट एंटायर जर्नी एवरीबडी हैज डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड what everybody wants uniquely at that level. अगर आप वेंडर से बात करें, वो कहेगा प्री पेमेंट हो जाए क्योंकि उसको पैसे फौरी तौर पे रियलाइज हो जाएंगे। अगर उसकी इन्वेंट्री आगे पीछे चलती रहेगी सीओडी की मद में, तो उसको नहीं पता उसने सेल बुक कर लिया लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ, वो पैसे रियलाइज नहीं हुए। लॉजिस्टिक्स कंपनी कहेगी यार सीओडी में फायदा ये है कि पैसे हमारे पास वर्किंग कैपिटल की मद में आ जाते हैं, बट प्री पेमेंट भी होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप कुरियर से पूछे, वो कहेगा यार सीओडी में मुझे टिप्स भी मिलती है, तो आई लाइक सीओडीज वर्सेस प्री पेमेंट्स। बट यू आस्क द टर्मिनल कस्टमर इन द हाई एंड एरियाज, दे लाइक prepaid deliveries because they don't want to be bothered with leaving cash at the gate or having to deal with the couriers. But in the low end areas, it's all COD. So I think we need to understand this at a more granular level and break it down at each point of the value chain. I'm just trying to list the challenges so that I don't miss it in the discussion. We will deep dive into each. ये हाँ ठीक है। They're all challenges. अहमद कोई और ऐड करें आप इसमें अगर कोई ऐड करने के लिए, वरना we start deep diving into it. अहमद आप म्यूट हैं। हाँ, once again, I'm sorry. तो इसमें है ये चीज कि बहुत सारी चीजें तो कवर कर ली हैं, जिसमें पेमेंट पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। उसने बताया, हमजा ने बताया कि हम लोगों को कोरियर से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद उसमें डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। लॉजिस्टिक में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब
हर महीने आपके मिलियंस की इन्वेंट्री है जो कोरियर जो है वो तोड़ रहा होता है, डिस्पोज ऑफ कर रहा होता है आपके लिए। एंड दैट फॉर कंपनी लाइक अस, जहाँ पे आप सेल्फ ग्रोन कंपनी, होम ग्रोन कंपनी है, तो उसमें जब आप लोग उसको देख रहे होते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट होता है। कस्टमर इस चीज को नहीं समझता। तो पेमेंट पार्टनर्स ऑफ कोर्स प्रॉब्लम के वहाँ पे बहुत सारी चीजें चैलेंज होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक कस्टमर प्री पेमेंट कर रहा है कि वुड बी गिवन एन एमडीआर एज वेल, तो उसको एक एमडीआर भी देना है ऊपर, जहाँ प्रमोट करना चाह रहे हैं पेमेंट को, प्री पेमेंट को। जहाँ जैसे रफीक ने बात की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कि बहुत सारी चीजें इस तरह की कि सेलर लेवल पे भी उनको चाहिए बेनिफिट, वगैरह में प्री पेमेंट मिल जाती है। हमें भी प्री पेमेंट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी बात है कस्टमर जब तक आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या इंडस्ट्री पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो कभी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह के इश्यूज को फेस कर रहा है। ठीक है, let's go deeper into each. Let's we have limited time, so let's add on to the challenges and then let's go deeper dive into each. Like Rafiq said, it requires a granular approach into few challenges at least. जी यूसुफ, आपका माइक सही हो गया? आपको आवाज आ रही जी आ रही है, हल्की आ रही है, अगर थोड़ा माइक करिए। Now you're getting? जी, this is much better. Thank you so much. जी आई बिलीव नॉट। ओके गुड। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, बाकी देखिए 2 बातें हैं। एहसान ने बड़ी अच्छी बात की है, शिकायतें तो हमें बहुत सारी हैं, लेकिन आप ये देखिए ग्रेजुअली मार्केट कितनी इंप्रूव हो गई है। जी वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सारों के लिए। पॉइंट 2 जो मेजर इशू है, मुझे लगता है कि अभी तक, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरा बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादातर रिटेलर्स, पेमेंट स्कीम्स, इनके साथ है। रिटेलर मीन्स फैशन, लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा इस वक्त इशू पाकिस्तान में टेक इंटीग्रेशन का है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे इस वक्त हैं ये ऑनलाइन के सेल्फ एक्सपीरियंस लोग हैं। जो वेंडर या जो रिटेलर या फैशन ब्रांड है ना, वहाँ पे तो अभी तक ये चैलेंज है कि आईटी और ई कॉमर्स अलग अलग है। यू विल बी अमेज्ड, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ बिग ब्रांड्स इन द कंट्री। दूसरा, अभी जो रऊफ ने बात की कि हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ मिसिंग है, मेरा ख्याल है शायद क्योंकि दराज सबसे लीडिंग है तो हर बात दराज पे आके रुक जाती है, कि जो प्रोडक्ट की इंश्योरेंस है ना, जैसे दुनिया में होता है कि डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको पे जितने बड़े प्लेयर हैं, मार्केट प्लेस हो गया या लोग अपनी ई कॉमर्स साइट पे ब्रांड्स खुद सेल करते हैं, तो वो जो इंश्योरेंस कवरेज है ना, वो कहीं पे हैंडल करनी अब ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुअली ये जो लास्ट 4 मंथ्स ऑफ कोविड थे ना, सब ने बड़ी मेहनत की है ई कॉमर्स और मार्केट प्लेसेस और अपनी सेल्स को बढ़ाया। बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी जो शायद अगले 5 साल में होनी थी, लेकिन बीच में ये जो मिसिंग है टेक की इम्प्रूवमेंट और इंश्योरेंस की कहीं पे प्लग इन होनी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो कंफर्टेबल रहे। बाकी हम बात डिटेल बड़े कर अच्छे लेते पॉइंट है यूसुफ, थैंक यू सो मच। जी अंस। Hi, so I think it all went down to this thing because I'm the only one to actually take care of it right now. But so apparently, I agree with everybody's point of view, where everyone is saying that e-commerce का एक बहुत बड़ा major reliability है on logistics and courier companies. I really want to add this point that one guest with Yusuf said that tech integration is very important. Second, I agree with Ehsan when he said that हमारे तो addresses ही complete नहीं है. मतलब आप defense लिखें, DHA लिखें, Defense Housing Authority, अगर Google पे लिखेंगे ये 3 अलग-अलग addresses हैं. That's one of the problems as well. With us, the major issue is we need to understand that as I said in the beginning, that we are trying to reinvent logistics in Pakistan. We actually want to cater all the pain points which you guys already discussed. And we're actually catering all the pain points as well. But that comes with a cost. And that is one of the major problems which nobody wants to bear. Because that all the e-commerce platforms or the brand or the national retail industry, they need to understand that is going to be expensive. As Ahmed said, insurance honi chahiye, hum insurance dete hain, that comes with a cost. So when things come to the cost, वो हम cost cutting देख रहे हैं या customer service देख रहे हैं, we need to figure out one thing. We need to figure out either we want to give the best of the best services, and that comes with a cost. Or if you want to save the cost, fair enough. then अब सबके मुद्दे को सही है, सोल्यूशन ढूंढते हैं अभी। एक दो चीजों को 2 या 3 चीजों पे हम सोल्यूशन की भी बात करते हैं। जी यूसुफ, फ्रॉम अ ट्रैवल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ई-कॉमर्स ट्रैवल इंडस्ट्री, यूसुफ Okay, so for the past 2 years आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर the travel industry has suffered, I mean a lot, क्योंकि एटलीस्ट नॉर्थ के अंदर जैसे ये बॉर्डर क्रॉस बंद कर दिया था तो ओवर फ्लाइंग अलाउड बंद हो गई थी. This year we've had COVID, so online travel industry itself being a portion of the total travel industry has got this effect.
बट द ब्राइट साइड ऑफ दिस इज कि ऑनलाइन बिजनेस जो था वो इस पोर्शन में, जबकि मार्केट साइज हैज ड्रॉप ड्रास्टिकली, ऑनलाइन की पेनिट्रेशन इस टाइम में बढ़ गई. So if you look at my business, we've actually increased our business in proportion to the total business that is being done in Pakistan. So the business itself is quite huge as a market size. मगर उसके अंदर जो प्लेयर सर्वाइव करें, उसमें यही था कि इस कोविड की टाइम की वजह से जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे या सस्टेनेबल थे या लोगों को जिन पे ट्रस्ट था या लोगों के जिनके पैसे वापस उनको मिल गए थे एयरलाइन से और वो लोगों कस्टमर्स को मिल गए थे, वो लोग जो सर्वाइव कर गए, they've built this trust, and thankfully God has been kind that we've been in this position that our business has gone up because of the trust that people had, that we were able to pay back, give them refunds, settle their accounts, and create. So this was one of the biggest challenges that we faced overall in the industry, where the airlines were not paying us, nobody was paying us, and then we had to give that money back to our customers. So I think it was a very tough time for us this year, last year as well, because market shrunk hui thi. But I think this is a great opportunity for us to look at it as an opportunity of improving overall our product and increase our sales platform completely. Great. Thank you, Yusuf. जी, so मैं जो 3 challenges जो मुझे बहुत resonate करे for the panel was, one was logistics. It can't be looked at in isolation. It has to be looked at in a lot of different ways, including the way that we collect payments. Let's do a little bit of deep dive into that कि marketplaces logistic companies से क्या expect कर रही हैं और उनको वो क्या advice दे सकते हैं कि ये improve कर लें तो हमारे लिए marketplace को चलाना आसान हो जाएगा. So let's go to the 4 players from the marketplace, and if we can get a view from Hassan on that. Yeah, sure. So I think first and foremost, what we really try to focus with a lot of our partners is to ensure that the success rates are as high as possible, right? And the damages that Ahmed Bhai also just mentioned a little while ago are the lowest that we can potentially get them to. And that's, to be honest with you, that is the reason that we started shifting more and more towards Daraz Express, is because we can control the customer experience a lot better. And I think finally the third element of that is the tech integration. And because now the customer is very different than the traditional envelope delivery model, because in the envelope delivery model you could just leave the envelope and it was done. There was nothing else. There was no one that was going to say यार मुझे नहीं चाहिए या आप ये वापस ले जाएं. अच्छा, cash handling नहीं थी, कुछ भी नहीं था. So all of those things have really had to force a lot of logistics companies to evolve. And we felt that the best way we could do that was to participate with them on that. So those, I think, were the sort of 3 areas I would, and I'm trying to keep it short because we have a lot of people here as well. But those are sort of 3 elements that I think are the reasons we started the Daraz Express. Customer experience is super important. And when we know हम अगर training handle खुद कर सकते हैं और हमें exactly पता है कि where the rider, or in our instance we call them the hero, where they are, that helps us a lot, frankly, because in logistics companies, especially the ones that go, when you have first mile, middle mile, last mile, your line haul ho raha hai, then it goes to sort centers. There are instances with some partners where only Allah knows where the product is, and so you need to have that sort of certainty, at least a little bit, that you know where the product is, and that is the reason actually that I think there's a big opportunity, and that's why companies like Baikia and Swift have a huge opportunity to be able to play, because they have more visibility. ठीक है, Hamza, you want to add a bit into that? हाँ, obviously I agree with the points that Hassan mentioned. एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो है वो कम्युनिकेशन है कोरियर की जानिब से, क्योंकि जब हम पार्सल एक बार कोरियर को हैंड ओवर करते हैं तो वी अज्यूम कि अब इसके बाद से कोरियर जो है वो हमारे कस्टमर को प्रॉपर टाइमली अपडेट्स दे रहा होगा, चाहे वो उनकी कैश ऑन डिलीवरी के अमाउंट्स के हवाले से. ऑब्वियसली वी आर आल्सो इंटीग्रेटेड विद कोरियर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन अक्सर औकात कस्टमर्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, कोरियर कहता है हमने 2 अटेम्प्ट किए हैं, कस्टमर ने रिजेक्ट किया, कस्टमर कहता है मेरे पास एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोरियर कहता है आपको 6 बजे पार्सल मिल जाएगा, आप रेडी रहें घर पे कैश के साथ. कस्टमर सारे काम छोड़ के 6 बजे से बैठा हुआ है, अगले दिन कोरियर आता है. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बड़े स्मूथली कम्युनिकेट करें हमारे कस्टमर्स के साथ फ्रॉम द टाइम वी हैंड देम ओवर द पार्सल्स. सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक, क्योंकि ग्लोबली दुनिया जो है
जिस तरह करीम अपने राइडर्स को रियल टाइम ट्रैक करके दिखाता है मैप पे, इस तरह ग्लोबली कंपनीज उनके पार्सल्स को ऐसे दिखा रही होती हैं कि आपका राइडर निकल चुका है और आपको 30 मिनट में आपकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो दुनिया RFID टैग्स, रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर लॉजिस्टिक्स वहां जा चुकी है, और हमारे यहाँ आज भी जो है वो मैसेज चलता है कि आज शाम में आपको शायद पार्सल मिल जाए या कल मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंटली होनी चाहिए टू मेक श्योर कि एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, यूसुफ आप अपने एंड से कुछ ऐड करना चाहेंगे? यूसुफ जमशेद, ताकि हम लॉजिस्टिक्स के पास जाएंगे और उनसे कुछ चीजें इस पर डिस्कस करें। होता कि अंश को भी हम आप जरूर पूछेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। देखें, जो हमजा ने बात की है ना, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर, जब तक कंज्यूमर इंटरेस्ट को अपलिफ्ट नहीं करेंगे ना, वो वहां पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में ना PRA ने एक ऐप लॉन्च की और वो टैक्स के साथ लिंक हो गई। होटल पे लोग जाते थे, वो पता था कंज्यूमर को मैंने क्या करना है। तो कंज्यूमर के साथ ये जो मार्केट प्लेसेस, जो ब्रांड्स है ना, उनकी इंटरेक्शन का कोई एक 3 वे मॉडल होगा, जहां होना चाहिए, जहां पे लॉजिस्टिक्स, इस पे कुछ काम हो रहा है। शायद मेरा ख्याल है ये प्लेटफॉर्म नहीं है अभी इस चीज को डिस्क्लोज करने का, क्योंकि वो भी प्री मैच्योर स्टेज पे है कि कुछ कंपनी जैसे काम के प्लान में आ गई हैं कि जो हमजा ने बात की है, और जो क्या नाम है, एहसन कह रहे थे कि जो कंज्यूमर के साथ और जो लॉजिस्टिक्स के साथ चलना है। देखें, मार्केट में कुछ चीज़ें बैड टेस्ट बिल्ड हुई हैं पिछले 5 साल में लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग। उसका फायदा ये हुआ कि पैरेलल और अच्छी लॉजिस्टिक्स कंपनी आ गई, जिससे डिलीवरी बढ़ गई। लेकिन नुकसान ये हुआ कि लोग वापस जाने के लिए, जो मार्केट प्लेसेस हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए और रास्ते ढूंढने लगे। ये नुकसान हुआ पूरी इंडस्ट्री को। लेकिन मैं शायद 1 महीने बाद हम एक और सेशन कर रहे हैं, उसमें आपको शायद कुछ ऐसी हार्ड स्ट्रांगली डेवलपमेंट मार्केट में नजर आ जाएंगे एकदम से, कि ये जो सारे गिले शिकवे ये दूर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है। देखें, नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, मैं इस वक्त वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, I can बड़ी understand that. स्टेज पे जी, जी, तो I इसलिए can वो, लेकिन understand यू that. विल फाइंड दैट इट विल फाइंड। Inshallah, what the purpose of these sessions is to understand how we can collaborate better in the industry as players of Pakistani industry, as different players who can make an industry grow. So purpose of the discussion सारा यही है, और ताकि हमें सुनकर शायद जो दूसरे players हैं उनके लिए भी helpful हो जाए ना ये सारी discussion. So the purpose is not to put anybody on the spot or just to say कि ये कर ले या ये वो नहीं कर रहा, but the purpose is to find out कि challenges क्या है and find out कि हम कहाँ collaboration points को miss कर रहे हैं maybe, right? कभी-कभी ये भी होता है ना कि हम collaboration points को miss कर रहे होते हैं. So if I were to go to the logistics companies now, Rafiq and Ans, whoever wants to take it, 2 या 3 चीजें सामने आई हैं: tech integration, communication, success ratio, damages. ये आपके मार्केट प्लेस के जो प्लेयर्स हैं, ये कह रहे हैं कि इनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, एंड इसको अगर इम्प्रूव कर लें तो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है. सो आप कुछ इस पे शेयर करें कि क्यों ये आपके लिए चैलेंज है और किस तरह आप इस पे वर्क कर रहे हैं. बिल्कुल, रफीक, we can go with you. देखें, there are two ways of trying to go about solving it. One way is that we are looking. Baikia is predominantly a hyperlocal player, which means that essentially when you need to send something, okay, we can pick it up instantly from you and deliver it literally within 1 hour to the terminal customer, right? Our return rates are negligible. I mean, they are like 0.01%. Why? Because a seller has sold something, a receiver is expecting it. A Baikia shows up in 5 minutes, picks it up, delivers it in the next 45 minutes, cash exchanges hand, it goes into the wallet seamlessly. The seller can retrieve it literally same day, or the seller can have the rider come back and deliver it. So one way of solving it is actually trying to hyper localize the intra-city play, not the intercity. The intercity obviously will require a lot more logistics, a lot more heavy logistics, but the intra-city play can be hyper localized. Now the thing is, a lot of the customers are not wired like that. They're not built to hand over parcels immediately. उनकी एक एग्रीगेशन का एक प्रोसेस होता है, एक वो सारे इकट्ठे करते हैं, सारी एक लेबलिंग होती है और फिर एक हैंडओवर का प्रोसेस होता है 3PL को. So I think both logistics players and marketplaces will have to sort of collaborate
to figure out that thing, because हम जब enterprise level customer के साथ काम करते तो उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, because they already have a set way of doing things. They've been handing over to TCS for the last like 8 years, or you know, and they're pretty set in their ways. The smaller guys are very easy to sort of convince कि नहीं यार ये तो immediate fulfillment हो जाएगी आपकी, right? So that's one thing. On the flip side of it, however, we are looking to work with players like TCS, Leopard, Strax, you know, and trying to improve their tracking, because they have a ball by ball play. उनके जहाँ parcel होता है, जहाँ last scan होती है, किस truck पे जा रहा है, किस जहाज पे चढ़ रहा है, किस गाड़ी पे जा रहा है, किस मोटर बाइक वाले को मिल रहा है, वो उनके सिस्टम्स को सारा पता होता है. इशू ये है कि उनके लेगेसी सिस्टम्स हैं, उनके पुराने सिस्टम्स है Oracle के, इसके, they are not as agile as the new tech companies. So you actually have to just stitch it all together and give visibility to the customer. And we are talking to the likes of TCS and Leopards to provide that granular level of tracking to customers, such that fulfillment levels can increase due to that. Okay. So Rafiq, you think there is more requirement of investment into tech, into the logistics companies also? जैसे आपने mention किया कि अभी आप जो tech है वो सारा एक legacy पे चल रहा है, and क्योंकि हम business operation चलाना चाह रहे हैं और tech पे focus नहीं कर पा रहे हैं, मगर अब वो business को hamper कर रहा है. वो tech पे ना focus करें, वो अपने core business पे focus करें, जो कि है point A से point B पर parcel पहुंचाना, right? वो tech हमारी जैसी कंपनीज को दे दें, दराज जैसी कंपनीज को दे दें, other players on this platform उनको दे दें, people who understand technology and can build it out for them very very easily and then integrate, right? So they should focus on their core business. I completely agree, and we can players like us can provide the plug and play technology that every vendor in the market can benefit from. So what I'm hearing is that logistic companies can collaborate on the tech front with each other. Right? Yes, absolutely. ठीक है. अंश आप ऐड करेंगे कुछ? I think it's needed. That's a very fair point, Rafiq, because what is happening is that everybody wants to build their own tech, and that takes time and that takes money. Exactly. Please add करें. Okay, I actually need 5 minutes on this, because whatever everybody has said, we're doing each and every bit of it. Like, you name it and we're doing it. Live tracking, the moment the parcel has been picked up from a warehouse, till the time it's delivered to the customer, it's all marked and it's all the notes. As Rafiq said, the problem is that in सब कुछ है, but technology, so all those legacy companies are working as BlackBerry and Nokia. You know, they're not innovating it. It's just that the tech is already there. It's nothing new. And we sat at GT for about 3 years and looked at this. We had a small category called errands, जिसमें हम बिल्कुल बाइकिया वाला मॉडल करते हैं, अभी भी करते हैं, which was just pick it up and hyper local deliveries. And we realized that B2B has a lot more. It's, you know, there are a lot of pain points that we can solve. We sat outside of the industry and we're looking at we're looking at from very different perspective. क्या मसले हैं, क्या pain points हैं जो हम solve कर सकते हैं. Payments के मसले हैं, लोगों को time पे पैसे नहीं मिलते, आपके parcels damage हो जाते हैं, customer rider और customer की interaction में बहुत difference है, riders की training proper नहीं है. The team who picks up parcel is very different. The team who's delivering it is very different. Customer को नहीं पता. वैसे हमजा भी कह रहे थे कि 6 बजे उसको बस एक चला गया, एक मैसेज चला गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली 6 बजे आ जाएगा या ये 6 के 8 बजे आ जाएगा. So you know that can only be solved by technology. And the best part is that, as Yusuf mentioned, that there are things happening already, and we are one of those who do those things. So with us, any customer can live track the parcel. He knows where the rider is. We are also building a customer app for your customers, because they're not my customers. We're building a customer app where he can, you know, there's another problem कि मैं घर पे हूँ पर मेरा parcel का address office का है. मैं office में हूँ पर मैं अब घर आ गया हूँ. So we're building an app as well where the customer can actually reschedule the parcel. The customer can change the address of the parcel. Then there's another problem कि customer कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. You know, like I don't have cash in the wallet as well. So then there's another problem that is reattempt, or probably that will be cancelled, will be sent back to you guys. So we're also trying to figure that out. We're integrating with card machines, we're integrating with Easy Paisa, Just Cash, you name it, and every payment method. So once the rider goes there, he should be a person who's available with 10 different mode of payments.
And you can just say the customer, you can talk to the customer and say, you know what, if you don't have cash, I've got 14 different ways of paying. You can pay me the way you want to. So that's one way we can actually contribute in the success rate. Another problem, and this is the problems we're trying to solve, and exactly the problems which everybody has just mentioned. We've just been here since before, and we have, we penetrated so well in the market. The reason was that we're trying to solve the problems which you've mentioned already. We're already solving it. Now the problem on the e-commerce side and on the brand side, there is another problem over there. Tech is going to be two ways. It's not going to be one way. We've built one of the best tech stack ever. The problem is that the other company or the other brand or the other marketplace needs to integrate with that tech. That means everybody needs to have their own tech team. They need to have a good tech-based tech stack as well at the back, which can be integrated and can be used seamlessly. So another problem is that, if you will hand over a parcel after 4 days, so let's say I ordered something on any brand XYZ on 1st of December, and you're handing over that parcel on 7th of December to the courier, that parcel is not going to be delivered. That will affect the success rate because the customer might have gone to the retail outlet, the customer might have gone out. The problem with e-commerce in Pakistan is, I've been in e-commerce past 10 years. The problem is that we don't have anything else to go for. We have shopping malls, we've got khana pina, and we've got grocery to do. That's it. We don't have any entertainment. As a family, as friends, we don't go anywhere else in Pakistan. हम खाना खाने जाते हैं, हम शॉपिंग मॉल में घूमने फिरने जाते हैं, सिनेमा स्क्रीन्स बंद हो गई, क्लब्स पाकिस्तान में नहीं है, और बहुत नीश के लिए कुछ रिजॉर्ट्स हैं, वो मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले लोग एक्सेस नहीं कर सकते. So they have to go out. So now that if they are going, if they are converting towards e-commerce, we can't play with them as an e-commerce brand and as a logistics company as well. Because if at this point we are not able to satisfy that customer who's stopped going out and started ordering online, that customer is never going to come back. Because वो तो अपनी वो उसकी entertainment थी, जो grocery थी, जो कपड़े थे, जो जूते थे, जो electronics थी, वो उसकी और उसकी family की एक entertainment point था जो वो खत्म था. So it's offline to online conversion where we are trying to solve each and every problem which everybody's just mentioned. Hamara success rate with every company like SN, Hamza, like we're working with SN as well, it's about 97 to 98%. The reason is that we are so badly integrated with everybody, and the more automated and the more technology enabled the platform is, देखिए राइडर झूठ नहीं बोल सकता, वेयरहाउस वाला जितने लोग ज्यादा हम एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी डालेंगे उतना ह्यूमन एरर सही है. सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो अनस कि आप लोग वो सारे चैलेंजेस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. And I think you're in a very mature state. The way Yusuf said, maybe a lot cannot be disclosed here, but seems like a lot of these challenges are being handled. एक जो customer experience का challenge जो हमने शुरू में discuss किया वो ये था COD versus online versus debit versus debit card versus credit card. So फराज, इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हम customer experience कैसे improve कर रहे हैं from an overall industry point of view? Yeah. So, Zainab, I would say इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त यूज़र एक्सपीरियंस है ऑन डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 3, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो जो एक यूज़र एक्सपीरियंस बनता है that's not very user friendly. I've seen different fintechs and payment players. They are providing a payment solution on the e-commerce platform जो कि कोड बेस्ड है कि आप यहाँ से वो कोड जनरेट करें, फिर किसी बैंकिंग साइट पे जाएं या बैंकिंग ऐप पे जाएं और वहाँ जाके अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ योर अकाउंट्स फॉर मेकिंग पेमेंट. सो एक ये यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब होता है जब आप एक साइट से निकल के फिर दूसरी ऐप पे जा रहे हैं या इंटरनेट पोर्टल के ऊपर जा रहे हैं, बैंकिंग पोर्टल पे जा रहे हैं, एंड यू ऐड दैट कोड एंड देन वो पेमेंट वहाँ जाती है. दूसरी चीज़ व्हाट आई फील के जो कस्टमर है एज अ कंज्यूमर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहाँ अभी लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द सर्विस क्वालिटी. सो कस्टमर इज रिलेक्टेंट टू
to add his debit or credit card information on that platform, क्योंकि वहाँ जो lack of trust है वो security का भी है कि ये जो platform है ये कितना secure है कि मेरा credit and especially debit card लोग attach नहीं करते क्योंकि they have a bank account with a lot of money in that. क्रेडिट कार्ड में यू एटलीस्ट है 45 डेज जहाँ पे आप डिस्प्यूट भी फाइल कर सकते हैं और फिर वो आपका पैसा जो है आपको रिफंड हो जाता है. So as a payment company, what we are working on a solution कि जहाँ पे you don't have to face these problems, और we are working on a solution जहाँ पे नया पे की ऐप प्लस द पेमेंट प्लेटफॉर्म इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो. और जैसे लाइक एवरीवन सेड कि लॉजिस्टिक्स में भी एक इंटीग्रेशन का बहुत मेजर टेक इंटीग्रेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है. दैट वी हैव सीन आल्सो इन द ऑन द पेमेंट साइड, जो इंटीग्रेशन विद द पेमेंट कंपनीज और द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं they have struggled a lot. And I've been talking to different e-commerce players, so मुझे हमेशा ये फीडबैक मिलता है कि इतना टाइम लग गया, 6 महीने लग गए, 2 महीने लग गए, 4 महीने लग गए, and after that the entire process is not seamless. So we have to work on the user experience on this payment side. Secondly, one of the major problems, if we look at the e-commerce players, so the settlement process है, it's improving day by day, but right अभी भी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हमारा पैसा कैश कलेक्ट होता है थ्रू अ लॉजिस्टिक कंपनी और थ्रू अ कोरियर कंपनी, so that cash comes into their account after a while, it's not immediately available like within that same day or after one day, because they have to make payments to their merchant जो कि marketplace के ऊपर हैं. So ये भी एक gap है जो we see that payment companies should look into this, और एक efficient settlement mechanism होना चाहिए, automated settlement mechanism होना चाहिए. I know some of the payment aggregators जो कि e-commerce के ऊपर payment के solutions provide कर रहे हैं, and they do the settlement manually using banking portals. So I as a payment platform, and we have a tech background. We are not banking people. So we think from the user's perspective, either it's a customer or a merchant. So the system has to be really automated. It has to be really efficient in terms of user experience for the consumer and for the settlement for the merchant. So ये कुछ points I see that if इसको address करना ज़रूरी है for any payment company, and we are working on these lines. ठीक है. सो एक तो ये है कि पेमेंट्स पे ट्रस्ट होना, और फिर एक हमने एक डिस्कशन में ये भी बात आई कि अगर कस्टमर एक्सपीरियंस में कोई फैक्टर इंश्योरेंस मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस या कोई ऐसी चीज, तो वो कस्टमर को ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट कर देती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलता या रास्ते में गुम जाता है तो मैं सेफ गार्डेड हूँ. सो एक इंश्योरेंस का एलिमेंट भी है जो कुछ यूसुफ ने भी मेंशन किया कि हमने किसी के पास से नहीं जा रही है. We'll have to mute everyone and then check. Okay, thank you guys. So हमने ये डिस्कस किया कि इंश्योरेंस इट्स अनदर एलिमेंट जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है, कस्टमर ट्रस्ट इंप्रूव हो सकता है. सो अहमद एंड यूसुफ रिजवी, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करें कि आपने यूसुफ मेंशन किया कि आप लोगों ने सब कुछ रिफंड किया. आई डोंट थिंक ये इंश्योर था सब कुछ, बट आपने रिफंड किया. बट क्या ये नहीं है कि हम इंश्योरेंस डूब जाए? या अहमद आप थोड़ा सा इस पे फिर एलैबोरेट करिएगा. जी यूसुफ, लेट्स गो टू यू फर्स्ट. Insurance as a product itself, I don't think insurance companies ने ऐसा कोई product बनाया है कि whenever you pay for a product online, for example, I would say it's a service, because देखिए हमारी चीज एक बहुत perishable चीज है. Whenever you get on a flight, लाहौर से कराची से इस्लामाबाद, as soon as that ticket is utilized, it's gone. There's no value, so that you can't. पहली बात तो है कि we can't credit it to our customers because you can't get a 7-day return back policy on it. Secondly, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो प्रॉब्लम फेस होता है वो ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमें कस्टमर के साथ करनी है,
वो रियल टाइम में उसके साथ कंप्लीट करनी है और उसको करना है, क्योंकि हमारे पास वंस इशूड ऑल्सो तो हम वो रिटर्न नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे हमें चार्जेस अप्लाई कर देती है। So I think you have to look at it in a complete manner where you see that कि ट्रैवल इंडस्ट्री पहले भी बहुत ज्यादा इसी वजह से इफेक्ट हुई, और अभी हमारे केसेस में ये हुआ कि जब एयरलाइन से हम बात करते थे कि हमने कस्टमर्स की पेमेंट्स वापस कर रही हैं तो आप हमें रिफंड्स दें, तो द एयरलाइन सेड आई एम सॉरी वी हैव क्लोज्ड, लाइक इवन अ एयरलाइन लाइक इतिहाद एयरवेज started refund by in end of August. Imagine the person who bought a ticket in February and he was planning to travel in March, or the 22nd March ko flights band hui, so now he had to wait till the end of August, and we had to return, we paid back the customer within 15 days. So we said okay, we will keep on settling our accounts as business comes back to normal. Jaise COVID ka lockdown open hua, we started settling people with payments. We have a lot of agents who work with us because the website is very convenient for them to use it. एंड दैट्स हाउ वी मेड श्योर कि हम एक सर्कल लोगों को पेमेंट्स करते रहे, उनको कन्वीनियंस देते रहे, जैसे जैसे एयरलाइंस ओपन होती रही उन्होंने रिफंड देते रहे, हम साथ साथ उनकी भी पेमेंट सेटल करते रहे या उनको एडजस्टमेंट्स देते रहे. In for example, they could talk to the airline and get that ticket changed, and they could use it for some in future travel. So इस तरह के साथ we were able to talk to them, and we are already in touch with most of all the people who buy from us, and thankfully it was a very tough time, but we were able to manage it. ठीक, thank you Yusuf जी. Ahmed, how has insurance helped you guys? देखिए हम लोग बेसिकली जो जितने भी हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं उनके साथ हम तो इस अंडरस्टैंडिंग पे हमेशा काम करते हैं कि या तो आप हमारा पार्सल जिस कंडीशन में हमने दिया है वो हमें वापस दे दें या गिव अस द कैश. तो इसके अलावा सिनेरियो में हम काम नहीं करते. लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे सिनेरियोज हो जाते हैं, जब जाहिर सी बात है आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो डब्बे डैमेज भी हो जाते हैं. वी डील मोस्टली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है. फॉर एग्जांपल अभी कल की बात है, मैंने एक प्रोडक्ट देखा, वो एक 1.25 लाख रुपए का एक टैबलेट है सैमसंग का, जिसकी वो स्क्रीन पूरी वो खराब हो गई. उसका रीजन ये था लॉजिस्टिक पार्टनर उसको प्रेस बहुत ज्यादा कर दिया था, शायद किसी को कहते हैं. सही, तो ये इस तरह के इश्यूज हमारे पास आते हैं. फॉर अस एज अ कंपनी जाहिर सी बात है जब आप एक ऐसी स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे जाहिर सी बात है वी आर ऑल सर्विस प्लेयर्स, जहाँ पे हम सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को कि हम आपके डोर स्टेप पे एक चीज पहुंचाएंगे जो कि प्रोडक्ट मेरा नहीं है. लेकिन हम जाहिर सी बात है ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम कस्टमर को वो नो क्वेश्चन आस्क वाली चीज होती है कि यार 7 डेज के अंदर अगर आप क्लेम दे रहे हैं हमें तो हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम आपसे मंगवा लेंगे. वो फिर हम उसको सेटल किस तरह करते हैं, हमारे कोरियर पार्टनर के साथ, वेंडर के साथ या अपनी पॉकेट से. तो वो तीनों सिनेरियो में हम उसको बेयर कर रहे होते हैं. कस्टमर को हम ये दिखा रहे होते हैं कि भाई आप जो है इंश्योर्ड है. तो आपने जो बात की कस्टमर ट्रस्ट किस तरह करे, तो हम लोग ये कहते हैं कि 7 डेज हैं और 7 डेज जब आपको डिलीवर हुआ वहां से काउंट करना शुरू होते हैं. हम उस चीज को मॉनिटर करते हैं. अगर आपकी कोई कंप्लेन आ गई है, हमारा एक टिकटिंग पोर्टल है पूरा सपोर्ट का, अगर आपने वहां टिकट रेज कर दी है, फिर वो कोरियर पार्टनर आपसे पिक करके हमारे पास लाते लाते महीना भी लगा दे और कोई इश्यूज होते हैं, तो हम आपको कभी ये नहीं बोलेंगे यार आपको कोई प्रोडक्ट खराब था या क्या इशू था. हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे. इफ द कंप्लेन इज जेन्युइन, हम आपको हमारे केस में हम 2 ऑप्शंस देते हैं स्ट्रेट अवे. ईदर यू वांट अ रिप्लेसमेंट और यू वांट अ रिफंड. फॉर अस रिफंड जो है वो एक बड़ा क्लियर सिनेरियो है कि हम आपके अकाउंट में IBFT हो जाएगी आपकी कंप्लीट अमाउंट इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्जेस एज वेल. और कितनी दफा ऐसी बात है इसके बाद हम लोग उसको डिस्काउंट वाउचर भी दे रहे होते हैं कि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे पास खराब हुआ है. तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी पॉकेट से उसको किसी तरह ट्रस्ट बिल्ड कराएं कि आपको जो प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन आपके पास हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं. 7 दिन के लिए वो इंश्योरेंस हमारे ऊपर है जो हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं कि अगर कोई इशू आता है कुछ भी आप हमारी तरफ उसको भेज दें, हम आपको क्लेम देंगे. ठीक है. कौन ऐड करना चाह रहा है? आई एम सॉरी आई कांट टेल. कैन यू हियर मी? जी फराज. जी. तो जैसे अहमद ने कहा ना कि रिफंड का जो मैकेनिज्म है और उसमें कस्टमर को एक ट्रस्ट देना कि अगर उसकी प्रोडक्ट सही नहीं होती और उसको रिफंड मिल जाएगा इमीडिएटली और आफ्टर 4-5 डेज, तो that will play a major role in uplifting the online payments. क्योंकि कस्टमर जिसको ये अश्योरेंस होगी कि अगर मेरी प्रोडक्ट ख़राब होती है, मैंने पैसे भी दे दिए हैं, तो मुझे 2-4 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे एंड या मेरी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी. तो दिस विल प्ले अ मेजर रोल in moving from COD to online payments. So इसके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से जितने भी e-commerce प्लेयर्स हैं. एंड आई बिलीव दराज ऑलरेडी ये कर रहा है इस चीज़ को. एंड उसके ऊपर आई डोंट नो एहसन ने
कितना आपने देखा है ऑनलाइन पेमेंट्स का, बट दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर ऑन द ई-कॉमर्स मर्चेंट. ठीक है. So it is all about customer experience after all, right? If the customer is there, then you are there. Ji Rafiq, you want to add something? Yeah, if I may just stop that up Please. a little bit. I can appreciate that. I can appreciate giving insurance may drive up online payments, but you also have to realize that the market for online payments in Pakistan is very, very minuscule. I mean, there are like 50 odd million bank accounts or 50 odd million debit and credit cards in this country. We lost Rafiq? Someone didn't like what he was saying. I disagree with this. Anyways, let's move on. Let him join in, and then let's continue the discussion. I want to add a 30-second thing here. As Pradeep was saying about it, he was talking about it before. The legacy companies, logistic companies, they actually want COD to be in the market, but the new companies, they really don't want COD because you know what? It's a liability for me as well. I need to carry that cash, and that cash is actually a liability. My rider who is carrying a cash and multiplied with the number of riders I have, multiply 100,000 rupees per rider, multiplied 500,000 riders. That's a lot of cash that goes out daily and comes back daily. So that is a liability. We also don't want the COD to be like we don't want to gather cash on anybody's behalf. But then that is kind of a reality, right? Like you were saying, the proportion of COD versus online is huge, and we need to understand how exactly. And you know, online payments, the parcels that are prepaid, it's easier to deliver them. You know, you don't have to find that person. You can just drop it at the door. You can give it to the guard. You can give it to anybody at that home. Get that digital signature done, and you're gone. You're done. The success ratio is a lot higher than COD. Okay. Ji Rafiq, please continue. We lost you when you were talking. Sorry. So yeah, I absolutely agree. It's a lot easier for the courier companies and everybody handling in that particular journey. It's easier if it's prepaid, right? It's exactly what Asan alluded to. It's like the envelope. कि यार आपने सिर्फ जाके देना होता है, कोई उसमें handling, cash handling, उसकी कुछ भी नहीं होती, reconciliation कुछ नहीं होती. Issue ये है कि यार 50 million बैंक अकाउंट्स हैं इस मुल्क में, 50 million डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, 5 तो मेरे पास हैं, तो यूनिक कितने हैं यार? सबके पास अगर 3 हैं तो 15 million हुए. Right, 15 million agar unique hai, that's less than 10% of your population. So if we think that miraculously the e-commerce players will start, and e-commerce players have to show growth. We're all VC funded companies over here. We need to show numbers. So we're going to go out and hustle for business, whether it's cash or credit or debit or online or whatever. We will need to somehow show growth, and we will get whatever business we need to get, right? So I'm just saying that the reality that this cash this becomes cashless is far down the road for Pakistan. It's not something that's going to happen over the next 3-4 years. So what I'm hearing very clearly is that one player is missing from this panel, which is who will help us create those accounts, who will onboard people onto having the bigger players in terms of banks and all of that, जो actually onboard करेंगे, उनको financially include करेंगे. तो ये एक journey है. I understand. Challenge which maybe this panel wants to get solved, but may not have a direct solution. जी यूसुफ. इसमें एक सेकंड यूसुफ बोल रहे हैं, फराज 2 मिनट दे दें. जी सॉरी फराज, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए कि ना जिस तरह से रफीक बात कर रहे हैं, एहसन बात कर रहे हैं, यूसुफ रिजवी ने भी बात की ना कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई प्रोडक्ट नहीं दी है. देखें, ये अगर ये बड़ी कंपनीज ऑनेस्टली कुछ कर रही होती ना, तो ये जो बहुत सारे प्लेयर्स आज बैठे हैं ना, ये ना होते. तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इस साल ना विंबलडन नहीं हुआ, टेनिस टूर्नामेंट होता है लंदन में ना, एंड दे वर द कंपनी जिन्होंने 17 ईयर्स पहले ना पेंडेमिक इंश्योरेंस कराई थी. 2 लाख पाउंड देते थे वो साल का, और दे गॉट 141 मिलियन पाउंड्स इस साल नहीं हुआ. तो अभी जो इंश्योरेंस की भी प्रोडक्ट ऐसे वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर दीज ऑल लेगेसी एंड वाइट एलिफेंट्स के. जी वी नीड समवन फ्रॉम रफीक मलिक एंड यूसुफ रिजवी को बंदा आएगा, या आई नो कंपनी NIC मतलब इस्लामाबाद में वो काम कर रही है इस पे कि वो इंश्योरेंस की ऐसी प्रोडक्ट ला रही है कि जो बीच में रोल प्ले करे और चीज़ों का ना सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए. जैसे अंश ने कहा, उन्होंने भी स्पेस देखी
तो ये जो बैंक्स हैं, अगर आप सब देख रहे होंगे, बैंक और टेलीकॉम इतना हाई लेवल बजट इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट रिटेलर के साथ काम करता हूँ, इतना हाई लेवल बजट स्पेंड करते हैं, जो कि शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद उस पर टेम्प्ट भी होते होंगे, यार ये पैसे हम खर्च कर रहे होते ना तो पता नहीं क्या चेंज ले आते हैं मार्केट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो जो डायरेक्शन है और यार वो जो प्रोएक्टिवनेस है ना, वो डिलीवरी नहीं हो रही है इन बड़े प्लेयर्स से। आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन So Yusuf, बैंक अकाउंट चाहे 15 मिनट भी है ना। जी maybe I'll cut you here and I'll say maybe we have to give them a pitch to make it attractive for them. जैसे you Rafiq ने कहा, you are funded and you have to show your results. They also need to show the results to someone, and maybe we're not able सॉरी, to मैं convince them. अब आपने मजबूर किया है, मैं एक बैंक का नाम ले देता हूँ। मेरा 2 साल से HBL का कार्ड यूज नहीं हो रहा और मुझे उसका SMS आता है। उस SMS की एक कॉस्ट है। मैं ये एक बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ, और HBL स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, पेमेंट गेटवे, डिस्काउंट्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सही है, मैं ठीक है। बात कर रहा हूँ कि वो जो पैसे की जो वेस्टेज है ना, वो जो प्रोसेस इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दे आर बिग कंपनीज। लाइक रफीक ने बात की ना, दे हैव क्विक डिसीजन मेकिंग थिंग एंड दे डिलीवर ऑन थिंग्स। दराज कहाँ से कहाँ ले आए, वी हर्ड लॉट ऑफ नॉइज अबाउट दराज। 1 मिनट के लिए दराज को पाकिस्तान मार्केट से बाहर तो रखें जरा, मैं देखता हूँ कैसे काम होता है इस मार्केट के अंदर। तो पॉइंट ये कि वो जो आप जिन लोगों को पिच करने की बात कर रही हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। वी नीड समवन कि जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वो, एंड ऑनेस्टली आप रिटेलर से जाके बात तो करें। मैं 2 मार्केट प्लेसेस नहीं आ रही है पाकिस्तान में, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। रिटेलर से जाके बात तो करें आप, उनकी टेक वीक है, उनका प्रोसेस वीक है, उनका ट्रस्ट तो छोड़ ही दें आप, उनकी जो लॉजिस्टिक्स के साथ बातचीत है उस पे उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। मैं ये इशू इसलिए रेज कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिगर प्लेयर वो रिड्यूस करके इधर से ही कोई चीज निकालनी पड़ेगी प्लीज। ठीक है, सही है। So maybe there will be someone who will set up something to help in this industry only. Ji Faraz, if you want to add something for a minute, then I have to start concluding. 8 baj gaye. If you are all okay to stay for a few more minutes, we will do a quick conclusion. I'll take a minute. मैं यूसुफ साहब की बात को ही कंटिन्यू करता हूँ। उतरे टियर 2 टियर 3 मर्चेंट्स के पास जाएं और वहाँ जाके उनको ऑनबोर्ड करें। वो खुश होते हैं कि उनके पास एक बड़े ब्रांड का एक बड़ा सा अकाउंट आ जाए और उसके पैसे आते रहें वहाँ पे, और मैं मजे से बैठ के खाता रहूं। ये इसी वजह से स्टेट बैंक ने EMIs को लॉन्च किया है। टेक बैक फाइनेंशियल कंपनीज हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में उतरेंगे भी। हमारा ब्रेड एंड बटर ट्रांजैक्शंस हैं, मर्चेंट्स ऑन बोर्ड हो, कंज्यूमर ऑन बोर्ड हो, उनके छोटे बड़े अकाउंट्स हम क्विकली खोल सकें, विद इन फ्यू मिनट्स खोल सकें, एंड दे स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग। और सिक्योरिटी एक मेजर रोल वहाँ प्ले करेगी, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो जैनब आपकी बात और जो यूसुफ साहब की बात है, मैं इसको कंक्लूड इसी तरह करूंगा कि बैंक्स दे आर डूइंग देयर बिट, बट उनके DNA का पार्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़। सो फिनटेक्स, EMIs, PSO, PSPs, they have to make this change. They have to onboard consumers, merchants, and make these transactions successful, online transactions, and move the market from COD, जैसे रफीक साहब ने कहा कि like we are a cash based economy. That's true, but कभी भी कंज्यूमर को इस तरह एड्रेस किया ही नहीं गया है कि हाउ दिस कंज्यूमर कैन मेक यूज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, एंड ये किस तरह सिक्योर है, कितना क्विकली they can come on board and they can start transacting securely and safely. सॉरी जैनब, मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। ये इन्होंने कंज्यूमर की बात की, आप सब लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो फूड बिजनेस में ना, वो सेल टैक्स वो जो 16% और कार्ड पे 5% हो गया है, अगर आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो एक देखिए, मैंने जहां से बात शुरू की थी, जब तक कंज्यूमर टैप नहीं होगा ना, अब लोग जाकर लड़ते हैं कि भाई हमने कार्ड से पेमेंट करनी है, और वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट पूरी मार्केट में बिल्ड हो गया है कि लोग, और वो अपना 12% बचाता है कंज्यूमर। तो वो एंड टच हो रहा है, जिस एंड का अब ग्रेजुअली सबको फायदा होना शुरू होगा। ग्रेजुअली वो प्रेशर मार्केट प्लेसेस, ई-कॉमर्स के प्लेयर्स और फिनटेक पे भी आने लग जाएगा। That's great to hear, Yusuf. I think that's how industries mature. So एक जो point जो मैं before we conclude मैं discuss करना चाहूंगी, वो ये है, सबने ये कहा कि टेक पे डिपेंडेंट है कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर हम टेक इंटीग्रेट करें तो हम सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऐसा ना, आप थोड़ा इस पे हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने को कि क्यों नहीं हो रहा ये,
जब हम सब कह रहे हैं होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं हो रहा? Yeah, I think इसमें देखिए, I think हमारे अलावा और भी players हैं, you know, and जी जी I think priorities की बात होती है, and ठीक once है. you stack up all the priorities, and like Rafiq also mentioned, for some organizations it is a priority, and for some others it's not. So you know, we are not all the players that are there in the industry, and so you also have to convince the guys that are I mean, you know, we're talking here about convincing the banks to innovate. That's, I mean, you know, no bank, not only in Pakistan, even if you ask banks globally, banks have never wanted to innovate, because if they innovate, then they lose their powers, right? And that's their strength lies in the way that things are continue functioning. So I think the idea is that players like us have to innovate, and we will force their hand. And we, at some point, I mean, agar aap dekhein kahin bhi duniya mein, they have forced their hand. You look at robo advisory today versus how advisory and brokerages were managed for tens of years, hundreds of years. It's now forced traditional advisors to start looking at data and considering robo advisory. So the point here is that players like us will have to force, and then it will hopefully result in an upstream other companies also having, because their power sometimes is in the fact that technology doesn't happen. सही है. So the players need to be integrated well enough to make that pitch strong enough for the bigger banks and all, right? So यहाँ पे collaboration की बहुत की वजह से चीजें improve होंगी. Collaboration का हम force करेंगे, वो आप वो you know, innovate नहीं करेंगे unless you really you start stealing their market share, and you start, you know, eating their food. And that's when they will wake up and say, okay, now I have to, because otherwise I start losing it. So, you know, you come to the point where if you start hurting their wallets, you know, that's when I think you'll actually start forcing the hand. ठीक है, ठीक है. अंश, आपने कहा टेक्नोलॉजी पे आप लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है. If you can help us in 2 minutes to understand why you're facing the challenges of others to help you integrate the pieces. It's very simple, as Anshul just said. You know, it's not only the route, and it's not only Telemart. It's like millions of marketplaces and millions of websites that are now live, up and running. So it's very easy. आप Shopify पे जाके एक वेबसाइट बना देते हैं, but वो उसके पीछे एक वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है. उस सबके बाद एक हमारे साथ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एक इंटीग्रेशन है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आपने रिकन्फिगरेशन करनी है. The more we use Excel, the more we'll be, you know, everybody is just using Excel. वो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं. वो उसमें गलती में, अगर वो गलती लॉजिस्टिक्स कंपनी से हो गई है, तो ब्रांड कहेगा कि लॉजिस्टिक्स कंपनी गलत करती है. तो अगर ब्रांड की गलती है, देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि if that parcel is not handed over to me in 4 days, or if the customer you lost the trust of the customer, that every time I order from XYZ brand, अंदर से रंग कोई और निकलता है, मैं नीली चीज मंगवाता हूँ और निकलती लाल चीज है. वो मेरे राइडर के साथ भी लड़ेगा, वो मेरा पार्सल देने से भी इनकार कर देगा, वो मुझे पैसे देगा, वो मुझे कहेगा पहले मैं पार्सल खोलूंगा फिर मैं पैसे दूंगा. My brand, you know, whoever the XYZ brand is, he would not allow me to open that package and deliver the product and take the money after the package is opened. Because अगर उसने खोला और जब ये तो नीला निकला है, मैंने तो लाल मंगवाया था, वो पैकेट काम करेगा और वापस दे देगा. When I return that parcel back to the brand, he'll be like, ये parcel तो खुल गया, मैं तो आपको इसके पैसे नहीं दे सकता. So we need to sit down together at some point with logistics and e-commerce, as Rafiq mentioned, as Emma, you need to talk to new people, I guess, because you need to get out of your legacy and old Korean companies. There are a lot of new people who are working on a lot of new things. So I can realize you have a lot of logistics issues. You can talk to Bike, Track, Swift, sub nahi kaam kar rahe. Technology hai, you know, like we are a tech company, we are not a logistics company, and we are doing nothing new. जो सारी चीजें मैनुअल होती थी, सबको ऑटोमेट किया. That is it. We've done nothing new at all. The only new thing we've done is that we actually came in and realized that अच्छा जो already existing चीजें हैं उसको automate करते हैं, और जो नई चीजें हैं, which is like recycling the parcel, which is change the address of the parcel, which is paying the parcel. क्योंकि बाज़ जगह देखें there is a trust factor, as has been saying, कि ब्रांड कहता है मैं दराज पे तो कार्ड से पे करूंगा, I Telemart पे कर दूंगा, but एक XYZ brand है, I just saw that brand for the first time, I don't believe that he's going to deliver the right product. मैं यहाँ कार्ड से पे नहीं कर सकता.
but at the doorstep, he wouldn't mind paying through the card, because if a rider has a card machine at your doorstep, that's, वो पाकिस्तान में लोगों को एक card machine पे एतबार है, online पे एतबार नहीं. That's a difference. So that's what we're trying to solve out. और इस सब के अंदर it's a two-way journey. कभी सिर्फ logistics company गलत नहीं हो सकती और कभी एक brand भी पूरा गलत नहीं होता. It's both ways. It's retail, e-commerce, marketplaces of any particular industry and any particular category. It's always going to be two ways. It's going to be logistics company and the marketplaces. देखिए, as I started, when I started, I said we've come along. It's not that this is not been हमारे industry में progress नहीं है. अगर मैं कहूँ तो I think I'm customer to almost all of you, and I think इतना भी बुरा experience नहीं है. Maybe I've been lucky, but there has been an improvement where people who would not want to trust all of this are trusting it. Are trusting the e-commerce marketplace, are trusting, are wanting to do online payments, because वही बहुत सारी conveniences भी आती हैं. So to conclude this, मैं अगर कहूँ कि हम potentially future में e-commerce industry को कहाँ देख रहे हैं, in 30 seconds each, क्योंकि अगर we're really running out of time, but I do want to do this futuring over here, ताकि हम थोड़ा सा इसको take away कर सकें कि आप as key players of the market, future e-commerce industry को कहाँ देख रहे हैं, और आपकी अपनी जो स्पेशलिटी है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप everyone can just contribute in a few seconds to that, then we can conclude this show. Ji Rafiq, can we start with you? Ji, I'd like to see more digitization, and I think we do see that at a local level, and connecting vendors or customers with vendors through our technology would obviously be awesome. And since we have a network of drivers, we'd be able to do the hyper-local fulfillment. So for us, we'd like to see, become a marketplace for the city, where sellers and buyers can interact. Ji Yusuf Rizvi, where do you see? I would say I foresee that payments would become much more faster. I think I foresee that in the future, payments would be very, very easy for make payments. In regards to the travel industry, what I feel is the market is just, I would like to see at least 30 to 35% of all travel in Pakistan being booked online. ठीक है, जी Hans. I see as we're venturing into fulfillment centers as well. That's one of the other pain points in this whole e-commerce industry. So I guess more fulfillment centers, more digitization, as we said, more technology enabled, and more seamless automations and seamless integrations. And e-commerce is, I guess Pakistan is one of those live markets, which is, it's fruitful. It's going to be one of the top markets in the next 5 to 10 years. Great, thank you, Hans. Ji Yusuf. मैं जैनब इस एनालॉजी पे काफ़ी अच्छा प्रीच करता रहा हूँ कि अगर आप किसी को बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे ना तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है. ये बड़ा सीरियस चैलेंज रहा है. लेकिन फॉर्चुनेटली ना वो जब टाइटैनिक डूब रही थी ना तो द बिगेस्ट एडवांटेजेस वाज ना द लॉबस्टर्स इन द किचन ना, क्योंकि दे वर गोइंग बैक इनटू द सी. तो ये जो 4 months थे ना, इसमें ज़बरदस्ती अच्छा खाना खिलाने के बाद ना इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और वो जो फूड पॉइजनिंग सब कुछ जो होना था ना वो हो चुका है. माय ओनली टेक इज दिस कि जी प्लीज इस मॉडल में, क्योंकि मैं रिटेल ब्रांड्स का काम करता हूँ, मैं उनको ही पुश करता हूँ कि कम से कम जहाँ तक पहुँचे इसी को सस्टेन करें. बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइंग या लीप फ्रॉग करेंगे ना तो जो कंज्यूमर है वो भी घबरा जाता है. लेकिन 4 महीने में हो गया है, वो लोगों ने मजबूरी में उस चीज़ को ऑप्ट कर लिया है. लोग टेक सेवी इतने ज़्यादा हो गए, जो अगर आप अपने पीरियड्स में देखें तो आपको अच्छा लगेगा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया. तो जिस जगह पे हैं उसको शायद 1 साल और सस्टेन करें तो ऑटोमेटिकली लीप फ्रॉग करने की गुंजाइश निकल आएगी. Great thought, Yusuf. So before we move to Ahmed, I have been informed कि जमाल साहब ने कोशिश की है कनेक्ट करने को, बट उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. So inshallah next time we will be able to have him on the panel. Ahmed, to you, future. जी देखिए, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिख रहा है, और वो सबसे अच्छी चीज जो आपको कोविड एक ड्राइवर मिल गया है कि आपको एक पुश मिला है
तो जो हम भी देख रहे थे ग्रोथ के यार शायद 2021-22 में हम अचीव कर पाएंगे, वो हम 2020 में अचीव कर ली थी, और वो पूरी इंडस्ट्री ने वो चीज देखी। लेकिन उस वक्त भी ऐसी बात है, हम एज अ कंपनी, आप कभी भी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एज अ कंपनी आप कभी भी ग्रो उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके जो पिलर्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी की हमने बहुत ज्यादा बात की, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हमारा प्लेयर है, पेमेंट पार्टनर्स हमारे जैसी बात है पार्टनर्स हैं, वेंडर हमारे जो है वो सेंसिबल वेंडर्स का होना बहुत जरूरी है, लॉजिस्टिक्स का अच्छा होना जरूरी है। तो ये सारे लोग अगर ऐसी बात है ऑन टेबल बैठ के एक दूसरे के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, ऐसी बात है फिर सबको ग्रोथ मिलेगी। हम लोग सबको प्रॉब्लम है, ऐसी बात है नॉर्मली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अगर कोरियर पार्टनर हमारे दोस्त यार है तो हम उनको बता देते हैं, वरना शायद वो उस चीज को रिलक्टेंट होते हैं। कितनी दफा ऐसी बात है कि हम अगर उसको नेगेटिवली ना लें, पॉजिटिवली लें कि यार ये इश्यूज हैं, हम इसको रिजॉल्व करें, तो जाहिर सी बात है। अब जैसे रफीक ने एक बात बोली कि न्यू एंट्रेंट्स आए जा रहे हैं, ऐसा ने बात बोली कि एक लेवल तक आप उस लेवल तक अपने आप को ड्राइव कर लें, छोटी कंपनी आना शुरू होंगी तो उनको लगेगा यार ये हमारा चंक जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि लोकल का जो छोटी कंपनीज है वो आगे बढ़े, नई नई टेक पे काम करें, फिर टेक्नोलॉजी डे एंड पे ड्राइवर है, हम हैं जो टेक्नोलॉजी बिजनेस, क्यों देखें टेक्नोलॉजी बिजनेस है जो सर्विस दे रहा है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी वीक है, जो कि पाकिस्तान में काफी हद तक ऑनलाइन स्टोर्स की है, तो जो कि नहीं होनी चाहिए, हमको पहले टेक पे काम करना चाहिए। वही है जो जिदान ने बोला था कि शॉपिफाई की वेबसाइट बना के, वो जैसी बात है आप अपने आप को ई कॉमर्स प्लेयर तो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है इटसेल्फ इज एन आर्ट। अगर आप उस पर घुसे तो एक बहुत बड़ी दुनिया है टेक्नोलॉजी। तो हर पार्ट जो हमारा है, हर पिलर जो है, अगर वो हमें सपोर्ट करता है तो ओवरऑल इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। ग्रेट, हमजा। The crux of this discussion obviously is in one word: ecosystem enhancement, ecosystem development. कोई भी stakeholder isolation में काम नहीं कर सकता। ई-कॉमर्स को फ्लरिश करना है तो पेमेंट्स पर रिलाई करना पड़ेगा, पेमेंट्स को फ्लरिश करना है तो उसको ई-कॉमर्स पर रिलाई करना पड़ेगा। तो जब तक शेयर्ड विजन, एक शेयर्ड गोल नहीं होगा सारे स्टेक होल्डर्स का, तब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। दूसरी चीज आपने पोटेंशियल के पूछा है, पोटेंशियल इससे आप अंदाजा लगा लें कि राइट नाउ लास्ट ईयर पाकिस्तान में 260 बिलियन यूएस डॉलर्स की रिटेल हुई और 1 बिलियन ई कॉमर्स है। लेस देन 0.5% ऑफ योर टोटल रिटेल इज ई कॉमर्स। तो इट्स बाउंड टू इंशाल्लाह एक्सप्लोड इन द फ्यूचर, गिवन कि सारे इकोसिस्टम के जितने लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो एक अच्छी तरह से काम करें, डिजिटाइजेशन को जो है वो प्रायोरिटी पर रखें, टेक को प्रायोरिटी पर रखें। और तीसरी चीज आपने पूछा कि कंपनी वाइज आप लोग क्या कर रहे हैं उस फ्यूचर के लिए, उस चीज को इन्हांस करने के लिए। टेलीमार्ट की ओमनी चैनल बिजनेस अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो है यही कि इफ ऑफलाइन इज बॉडी, ऑनलाइन इज सोल, सो बॉडी विदाउट सोल डज नॉट फंक्शन। तो हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट ई कॉमर्स के ऊपर ऑन द होल है लोगों का, उसको जो है वो एलिमिनेट करने के लिए हमने जो है वो एक ओमनी चैनल अप्रोच इसीलिए लिए है, ताकि हम मेक श्योर करें कि इस पेनिट्रेशन को, इस कन्वर्जन को ऑफलाइन टू ऑनलाइन को सीमलेस बना सकें और उसको जो है वो एक कैटलिस्ट करें। ठीक, थैंक यू हमजा। एहसन। जी एक्चुअली आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी मेंशन। तो आई थिंक इसके अलावा मैं बस एक चीज जो मेंशन करूंगा वो है कस्टमर एंड सेलर एजुकेशन और मैच्योरिटी। उसमें आई थिंक इट्स यू नो इट्स अ प्रोसेस एवरीवन गोज थ्रू। जब आप देखते हैं कि यू नो व्हेन कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट फ्रॉड, व्हेन सेलर्स कंप्लेन अबाउट फ्रॉड, it's a matter of maturity, and so I don't think it's something that is, you know, it's brand new or it's only Pakistan related. But my hope would be as the ecosystem grows as well, that there's more maturity on the sellers and customer side. इसके वजह से we focus a lot on something that we've launched, which is Daraz University, जिसमें हम end-to-end education करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन आने तो how you should do it, आपको पैकेजिंग कैसे करनी है. You know, literally every step of the way we educate and we give them tests before they can sell. और इसका मकसद यही है कि इसमें maturity आए, sellers में maturity आए और customers में maturity आए, which I think will inshallah help the ecosystem. Inshallah. जी फराज. Okay, so Hamza read my mind. I was about to say what Hamza has already said. So I believe there is a huge potential out there, and but provided we have a seamless end-to-end user experience, plus all the e-commerce players they have to address fraud, chargebacks, refund very well. So if these things are catered, so I see a huge potential. Great. Thank you, Faraz. Thank you, everyone. Thank you, Kaval and CxO Forum for giving at least me the opportunity to discuss this in detail. जब कवल ने मुझसे कहा था कि ये कर लें तो उस वक्त I think आप सब decide हो चुके थे. But I'm really glad that I was part of this discussion. As a customer, I see, as I said, I see this has matured.
someone from the tech industry, I would never order online. But for the last 3 years, I'm telling you, I'm a customer to most of you, and a satisfied customer to that end. And I'm looking forward to all of this improving. इंशाल्लाह आप लोगों की बातों से भी बहुत encouragement है कॉमर्स इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, वो एक पॉजिटिव नोट पे हैं. they have a, देखिए आपका चैलेंज थोड़ा कम है, बेस थोड़ा छोटा है, जैसे हमजा ने कहा बेस छोटा है. there's a lot we can do. जो potentials हैं वो ecosystem collaboration के हैं. So these are some forums. I'm sure you guys would want to get together often and find ways of collaboration. Tech का मैंने बहुत सुना पूरा. I'm sure next time when we talk, there will be more initiatives that we hear of on the tech side, which could be enablers, and of course influencing to customers, sellers, banks, and all of that is also we see as potentials. कि उन सब चीजों को भी अगर हर प्लेयर थोड़ा थोड़ा वर्क करेगा तो चीजें बेहतरीन की तरफ जाएंगी और ओवरऑल इंडस्ट्री को और कस्टमर एक्सपीरियंस को फर्क पड़ेगा. So thank you very much everyone for sparing the time. Sorry for going over time, but it was a really good discussion. I hope you enjoyed it. I really enjoyed it. So thank you very much. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Allah Hafiz everyone. Thank you. Thank you.